हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि आवाज का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। आप सुन रहे हैं प्रियंका सुराना को। मैं कौन हूँ? सिंपल, अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड एन ऑडियो बुक नरेटर। बेसिकली जो आप काफी चीजें सुनते हो वो मैं हूँ। याद है वो अर्ली डेज जब लाइफ में बस एक ही फंडा था, रेडियो। रेड एफएम और रेडियो सिटी के स्टूडियोज में काफी साल धमाल मचाया है। वहां से आवाज की रेंज एक्सप्लोर करना सीखा। फिर मैंने बोला अकेले ही काफी हूँ और अपना खुद का स्टूडियो बना लिया। आज आपकी फेवरेट स्टोरीज यहीं से आती है। पॉकेट एफएम की हार्ट स्टॉपिंग सीरीज, कुकू एफएम के मोटिवेशनल किस्से, ऑडिबल पे चलती हुई क्लासिक किताब और स्पॉटिफाई के काफी पॉडकास्ट। हर प्लेटफॉर्म का वॉइस पार्टनर हूँ मैं। वेट, जब आप टीवी पे एड्स देखते हैं बाय वन गेट वन फ्री और ये बड़ी बड़ी फिल्मों की डबिंग, वहाँ भी काफी मेरी आवाज की गारंटी चलती है। नो फिल्टर, जस्ट साउंड। तो नेक्स्ट टाइम कोई ऑसम एड सुनो या कोई कहानी में खो जाओ, समझ जाना प्रियंका सुराना ऑन ड्यूटी थी। अगर आवाज को अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो ये वीडियो और चैनल आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय स्पेस। आई एम सो एक्साइटेड टू फाइनली बी शेयरिंग दिस विथ यू। जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है ना, तब से आई वांटेड टू शेयर माय दिस जर्नी विथ यू ऑल। एंड फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। जिन्हें भी पता है कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड ऑडियो बुक नरेटर हूँ फॉर मोर देन 10 years in India. Many people have had so many questions, curiosity, and looking for guidance in the same field. So here I am to share all my learnings, experiences, and jugaad with you all. We have all grown up imagining view artist मतलब easy money, no camera stress, बस माइक के सामने बैठो, speak a few lines and पैसा ही पैसा। ये काफी हद तक सही भी है। It is accessible but easy? Definitely not. It is a job that will test your discipline, your patience, and your consistency. But trust me, it's also the most rewarding thing ever. So come, let's talk about what it's really like to be a voiceover artist in India. आप तैयार हैं? The struggles, the जुगाड़ and the unexpected joy की journey के लिए? Let's start with one thing that stops most aspiring artists, the studio setup. People think I need a lakh rupee booth. I need the best mic in the market. But listen to me carefully. I've started with zero budget. My first mic was trusty Fifin K670B. And my setup? It's super funny. मेरा पहला studio was made of cardboards. Literally, I used Amazon boxes. I stocked them up, put some pillows inside. I was recording like a ninja inside a blanket fort. All because I was fighting that one monster. And that is reverb. Reverb was my biggest enemy. And फिर मिला जुगाड़। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो सेटअप बहुत अच्छा था, बट काम चलाऊ था। उसके भरोसे प्रीमियम वर्क तो आपको मिल ही नहीं सकता, बट एवरेज वर्क you can easily manage. Now, after few months, when I finally upgraded myself, मैंने एक wooden cupboard खरीदा. And I dedicated one section to my work. I lined it with acoustics. I even hanged a few clothes inside to kill the remaining echo. I used a high chair, kept a small laptop, and my mic inside. And there you go. Best pocket-friendly studio setup ready. So the trick is, use what you have. Don't wait for the perfect studio to start recording, yeah. You can build your way up. Now, once your voice is clean, the next step is finding work. Clients कहाँ से लाए? The good news is the Indian VO market, the Indian voiceover market has exploded nowadays. The main avenues for VOs today are audiobooks, जिसमें Pocket FM, Storytel, Audible, काफी सारे बड़े, like there are big giants in this industry. Then next is dubbing. For OTT content, for regional films, for a lot of movies, you need dubbing. And then corporate and e-learning.
In this, there's the training modules, IVR systems, there are a lot of options for that as well. सो ये तो हो गए एवेन्यूज जो आप चूज कर सकते हैं अपने वॉइस क्वालिटी और कंफर्ट के मुताबिक. बट इसके लिए काम लाए कहाँ से? आपके दिमाग में आने वाले हर सवाल का जवाब है इस वीडियो में. लेट मी टेल यू दैट. All right, now moving on, I found Indeed very, very useful for corporate and the most reliable source for long term tie ups mostly. But for new clients and collaborations, LinkedIn was a key. It's not just for jobs, it's for networking. In this industry, the more relevant connections you have, the better work you get. ऑल्सो बहुत सारे फ्रीलांस वर्क एप्स भी है जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है एंड द लिस्ट गोज ऑन. देयर यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल, शेयर योर सैम्पल्स और जब रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी आए तो यहाँ बिडिंग करनी होती है. द बेटर प्राइस यू ऑफर टू द क्लाइंट, द मोर वर्क यू गेट. सिंपल बट of course quality matters. Now let's talk about the uncomfortable truth. Money. पैसा ही पैसा वाली बात कितनी सच है? You might land on a big ad campaigns that pays extremely well, or you might get a small gig also. My first tiny project was for just rupees 1200 per month. Yeah, I'm not kidding, guys. It wasn't much, but that first client, उसकी खुशी ही अलग होती थी यार. It changed a lot for me. It proved I could do this, you know. Now if you ask me आपकी सबसे favorite सब category इसमें से कौन सी है, then I will immediately say audiobook narration. Yeah, the satisfaction of telling stories, of becoming the voice of self-help guru, a fictional character or a narrator. People listen to it every single day. That feeling is unparalleled, guys. Your voice reaches millions without you being seen. It's the ultimate feeling of power and presence. Narrating audiobooks, especially self-help content, genuinely changed my perspective on life. हाँ, बोलते बोलते खुद भी सीख जाते हो यार. I remember one time I was narrating a horror audiobook for Pocket FM late at night in my cupboard studio. The script was genuinely scary. और बाहर some टप टप की आवाज आ रही थी and I screamed so loud inside that little space that I had to stop and check if my neighbor had heard me. That first Pocket FM project, what a roller coaster, yeah. That's a full story I would love to tell you in detail, maybe for the next video. Now let's discuss the elephant in the room. Rejection, competition and mental health. ये सब तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है. Rejection comes often. You will audition for 10 projects and maybe land on one. That waiting period, waiting for projects, affects your mental peace. You start doubting yourself. But here is the biggest lesson. The trick for all of you. Voiceover isn't just work. It's mindfulness, patience and presence. To dealing with competition is consistency. आपका माइक ऑन है या नहीं, आपकी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए. It will test you, but if you keep showing up, you will eventually make it. And it's as simple as that, right? So, in conclusion, is being a voiceover artist glamorous? Not really. Accessible? Yes. Easy? Definitely not. It will test your patience and your consistency, but if you stay with it, it's worth every second. So guys, that's my full honest experience. If you would like me to go deeper into the real challenges, like the technical side of audio editing or hear the full story of how I cracked my first Pocket FM project, let me know in the comments. Now I'm working with many other brands as well, like Kuku FM, Audible, Spotify, and many more such. If you want to know all of it in detail, then hit that like button, subscribe if you haven't, and I'll see you next time. Bye-bye.